राजेश कुमार। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 631 किलोहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनिए अंग्रेजी वार्ता। वार्ताकार है मेनका मिश्रा। There is a sloka in Rig Veda reads as Apsu Antam Amritam Apsu Bheshajam Apam Ut Prashashyate Deva Bhavat Vajinam, means water is like nectar, water is like medicine. We must offer our prayers immediately. No doubt, the significance of water is beyond any comparison in our life. We cannot imagine a life without water. As we all know, the largest source of fresh water is river, and since the beginning of humankind, we consider rivers as Jivan Daini. All the great civilization developed around banks of rivers. So, in true sense, if there is no rivers, there is no life. Rivers are major source of fresh water. They provide immense benefits and services to people, communities, and the planet, from drinking water to crop irrigation. We use fresh water in many aspects of daily life, including food production, power generation, manufacturing, and sanitation. In most regions of the world, 70% of the fresh water is used for agriculture. In addition, 10% of the world's animal species live exclusively in freshwater habitats, many of which are currently threatened with extinction. We use rivers for leisure activities such as swimming and boating and transportation as well. We must not forget that to feed people on the planet, rivers are essential. As per the WWF reports, 1/3 of food production and 40% of global fish consumption depend on rivers. But we are at the risk of damaging one of our greatest tools in feeding the planet. We are pumping out too much water, catching too many fishes, damming the flows of rivers for hydropower, and flooding rivers with pollutants. Unfortunately, invaluable river systems all over the world are under stress from damming of the flowing water, contamination with hazardous pollutants, overfishing, and more. Rivers enriches our life and need protection. We must act together to support river conservation so we can keep rivers healthy, sustainable, and flowing for generations to come. All the people, governments, businesses, financial institutions, and communities must act in tandem to ensure healthy rivers exist to conserve wildlife and provide a sustainable future for all. Now, the big question is how to protect our rivers. Rivers can be saved only through our mutual support and urge to save water. A lot of damage has been done already. Now it's time to rectify it. Rivers are the lifeline of any kind of civilization. They play a vital role in sustaining life in this planet. But of late, it has been seen that our perennial rivers are losing their identity. Some of them have even dried up and are on the verge of extinction. They are in a very bad phase right now. We need to protect our rivers. Most of the rivers have converted into drains. They are covered with so much filth that they cannot be considered as a source of fresh water anymore. Water pollution has become a burning topic in our country. Various NGOs are continuously spreading awareness regarding this. The government is also not far behind in this sphere. Namami Gange can be taken as an example. It is a scheme for cleaning up the river Ganga. But we cannot rest this responsibility only on certain organizations or the government. As a responsible citizen, it is our duty to save the rivers. Well,
If not for the future generation, then at least for ourselves. Some of the ways in which rivers can be saved. Rivers are dumped with various waste such as household, industrial, etc. It is very important to check that the waste are treated properly before discharging into the rivers. Oil spills from the vehicles or heavy industries should not be allowed to get discharged into the rivers. Strict water laws should be there. In our country, various dead bodies and animal carcasses are thrown into the rivers on a daily basis. This makes the water very dirty, which should be stopped immediately. Rivers should not be taken as a public property and misused. Rather, it should be taken care of as one of our own personal belonging. It is often seen that a large number of fairs are held on the river banks every year. This also leads to water pollution. The various waste of such fairs should not be allowed to get discharged into the rivers. Rivers are getting dried up gradually. A very serious reason behind it is the global warming. The ecological imbalance is quite high, which has resulted in this. The dramatic change in the climate has caused the drying up of rivers. The government also plays a very significant role in saving the rivers. Strict laws should be implemented regarding the usage and sewage of rivers. One important activity is plantation on the river bank. The root system of plant clings to the surrounding soil and creates stability, reducing the amount of dirt that runs into rivers and gums up the work. Trees have some of the widest and deepest root of all flora, and they help with greenhouse gas emission to boot. Just make sure to plant a species that can handle your biome. We all should be hardcore water conscious and must instill the idea in the brain of our kids too. Instilling conservation habits from a young age will help them become sustainable adults. Another important point is to create awareness among people regarding the death of rivers. Most people are not even aware of the ill health of our rivers. They should be educated regarding the issue and also motivated to save the rivers. Fortunately, there are some non-profit organizations which work tirelessly to save our rivers. Many of them are playing an important role in reviving of rivers, restoration of ponds, water conservation, rainwater harvesting, recharging underground water, etc. One such NGO is founded by Dr. Rajendra Singh, popularly known as Waterman of India. Other NGOs are doing great job to accomplish the task of conservation of the rivers. To popularize the issue, the massive ecological campaign Rally for Rivers was purely an awareness campaign to get people's support to change the policy of how we treat our rivers. Another popular movement that took place in recent past was Kaveri Calling movement, in which farmers of Karnataka planted 2.1 crore saplings in their lands in a time span of 2 years. Save Ganga movement and Namami Gange are two specific projects to rejuvenate our holy river Ganga. Mass awareness, proper planning, and dedicated actions are the key factors to achieve goals. Rivers too can be saved only through our mutual support and urge to save them. नमस्कार. A lot of damage has been प्रस्तुत है done already. समाचार संध्या. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के धारवाड़ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान रवाना. सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और निर्यात के लिए अमूल के साथ मिलकर मल्टी स्टेट निर्यात केंद्र स्थापित करेगी.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, शांति प्रिय भारत के बारे में ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए कि उसे युद्ध से डर लगता है। सरकार देश भर के सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऐप जलदूत से देश भर के गांव के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाया जा सकेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गलत सूचना फैलाने के लिए 10 यूट्यूब चैनलों को बंद किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET का परिणाम घोषित किया। इटली में जॉर्जिया मेलोनी का पहली महिला प्रधानमंत्री बनना तय, उनकी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने राष्ट्रीय चुनाव जीता। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की 9 दिन की पूजा अर्चना का नवरात्र अनुष्ठान आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को शुभकामनाएं दी। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कर्नाटक के धारवाड़ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने भारत को विश्व गुरु बनाने में ज्ञान समाज की भूमिका पर जोर दी। उन्होंने कहा कि IIIT जैसे संस्थान युवाओं को कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, डेटा साइंस, डिजिटलाइजेशन, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में शिक्षा से अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में युवाओं को शिक्षित करने के लिए तैयार करती है। उन्होंने चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी कर्नाटक में हुबली धारवाड़ नगर निगम ने आज अभिनंदन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि ओडिशा के एक साधारण परिवार से आने वाली महिला को सम्मानित करना देश की सभी महिलाओं के सम्मान करने जैसा है। उन्होंने आह्वान किया कि आजादी का अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर देश के सभी नागरिक आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करें। राष्ट्रपति ने कहा कि हुबली और धारवाड़ शहर कन्नड़ और मराठी लोगों के बीच भाषाई सद्भाव बनाते हैं। उन्होंने इसे प्राचीन के साथ आधुनिक का मिलन बिंदु बताया। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने मैसूरू के चामुंडी हिल्स में मैसूरू दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विभिन्न पर्व लोगों को आपस में जोड़ते हैं। हमारे देश के ऋषिमुनियों ने तथा सामान्य जनता ने भी सदियों से भारतीय समाज को उत्सवों के माध्यम से जोड़ रखे हैं। रामायण, महाभारत, पुराण, इतिहास और लोककथाओं के देवी और मानवीय चरित्रों पर आधारित पर्व पूरे देश में मनाए जाते हैं। इस पर्व में विविधता के साथ साथ एकरूपता भी दिखाई देती है। मैसूरू दशहरा भारत के संस्कृति के गौरव का पर्व भी है। राष्ट्रपति मुर्मू कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति के रूप में किसी राज्य की ये उनकी पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए टोक्यो रवाना हो गए हैं। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और श्री आबे की पत्नी के प्रति सभी भारतीयों की ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे को अपना प्रिय मित्र और भारत जापान मैत्री का महान शुभचिंतक और समर्थक बताया। श्री मोदी ने कहा कि शिंजो आबे की परिकल्पना के अनुरूप भारत जापान संबंधों को सुदृढ़ करने का काम जारी रहेगा। एक चुनाव प्रचार वर्ष 8 जुलाई को शिंजो आबे की हत्या आबे के 9 जुलाई को की घोषणा की थी। मोहन क्वात्रा ने बताया कि टोक्यो के अकासाका पेट्रोलियम और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री तथा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस